Hello students, the question is, consider a moving coil galvanometer. Statement A, the torsional constant in moving coil galvanometer has dimensions ml square t minus 2. Statement B, increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity. Statement C, if we increase number of turns to its double, that is n to 2n, then the voltage sensitivity doubles. Statement D, moving coil galvanometer can be converted into an ammeter by introducing a shunt resistance of large value in parallel with galvanometer. Statement E, current sensitivity of moving coil galvanometer depends inversely on number of turns of coil. Choose the correct answer from the options given below. Option 1, A and B only. Option 2, A and D only. Option 3, B, D, E only. And option 4, A, B, E only. So the problem is based on the topic electromechanical instruments and particularly the galvanometer. So now let us analyze the statements one by one. So the first statement is the torsional constant in moving coil galvanometer has dimension of ml square t minus 2. Now the torsional constant is basically C here in this equation, tau equals to C theta. So this constant is known as the torsional constant. Now according to the concepts of units and dimensions, we know that first of all that this theta, which is angle here, is dimensionless quantity. So according to the basic rules of dimensions, C has a dimension of the torque, tau. And we know that torque is basically F into D, that is force into displacement. And the force has a dimension of mlt minus 2. And D has a dimension of L. So it becomes ml square t minus 2. So this is the dimension of torque as well as the dimension of the torsional constant. So the torsional constant in the moving coil galvanometer has the dimension of ml square t minus 2. This is the correct statement. So statement 1 is the correct statement. Now let us move forward to the second statement, statement B. Increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity. So first of all, we have to understand what are the basic formulae for the current as well as voltage sensitivity. We have to know these two formulae. So the current sensitivity SI is given by NBA upon C, where N is the number of turns, B is the magnetic field, A is the area of cross section, and C is the torsional constant. And the voltage sensitivity is given by NBA upon RC. So these two are the formulae for the current as well as the voltage sensitivity. Now it is written here that increasing the current sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity. Let us analyze this statement. First of all, suppose let us increase the current sensitivity by increasing A. By taking A to be in increasing manner, if A increases, SI increases because it is directly proportional to A. And if A increases, SV also increases. So we can say that if we increase the current sensitivity, in this particular case, the voltage sensitivity also increases when we increase the area. Similar is the case for C. If we are increasing the torsional constant in this expression, you can see from this expression, if we increase C, then SI increases, and SI increases, then certainly SV also increases in this case. Now suppose we are increasing the magnetic field, and we are increasing the magnetic field, then the SI also increases, and when SI increases, SV also increases. C basically, we have to reduce C to increase SI, and when we reduce C, SI increases, and when we reduce C, SV also increases. Now let us move this important factor N here, the number of turns. So when number of turns increases, SI increases, but this is not the case for the voltage sensitivity, because when we increase N, R also increases in the same proportion. R is basically the resistance here in this expression. The reason is N denotes the number of turn of the coil, and suppose we increase it to double, for example, then this length of the wire also doubles. And we know that the length is related to the resistance by this formula, R equals to rho L upon A. So if we double the length, the resistance also doubles. So in this way,
if n doubles, r also doubles, and it cancels from both the numerator as well as denominator. So that's why there is no change in the voltage sensitivity if we increase the number of turns. So that's why we can say that the current sensitivity in this particular case, it increases, but the voltage sensitivity remains constant. So this statement is totally correct here. It may not necessarily increase the voltage sensitivity. Now statement C. If we increase the number of turns to its double, then the voltage sensitivity doubles. Now this statement is clearly related to the previous statement, statement B. We have discussed it basically that if we increase n to 2n, then there is no change in the voltage sensitivity. The reason is if we increase n to 2n, the resistance also increases to 2r. So this 2 cancels in numerator and denominator. So that's why this statement is a false statement. Now the D statement is moving coil galvanometer can be converted into an ammeter by introducing a shunt resistance of large value in parallel with the galvanometer. Now we can convert the galvanometer into an ammeter or a voltmeter. For ammeter, we have to place a shunt in parallel with the galvanometer. That's true up to now, but it is not having the large value. The shunt which is placed in parallel with the galvanometer is having a small value. So that's why this large here is incorrect. So this particular statement is also incorrect statement. Now the statement E, current sensitivity of moving coil galvanometer depends inversely on the number of turns of the coil. Now you can easily see from this formula that SI is directly proportional to N. Current sensitivity is directly proportional to the number of turns. It is not inversely related to the number of turns. So that's why this statement is also a wrong statement. In this way, only statements A and B are correct. So we can say that option 1 is correct here, that A and B only are the true statements, correct statements. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है गैल्वेनोमीटर के रिगार्डिंग। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें उनकी वैलिडिटी चेक करनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है टॉर्जनल कांस्टेंट के बारे में, जो कि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है गैल्वेनोमीटर के केस में, जो रिलेटेड होता है टॉर्क से। टॉर्क बेसिकली बराबर होता है टॉर्जनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा। यहाँ पे थीटा जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिट इसकी रेडियन है, लेकिन ये इसके डायमेंशंस जो हैं वो बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है थीटा। दैट्स वाई सी और टॉ की डायमेंशन जो है वो सेम होंगी। टॉ जिसे हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स की डायमेंशन हम जानते ही हैं ml/t-2, डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है, तो टॉर्क की डायमेंशन हो जाती है ml²t-2। तो उस हिसाब से टॉर्जनल कांस्टेंट की डायमेंशन भी ml²t-2 होंगी। तो ये पहला स्टेटमेंट टोटली करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी जो है इंक्रीज़ हो। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया इन फॉर्मूले से। दो फॉर्मूले लिखे हमने। करंट सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला है NBA/C, वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला है NBA/RC। तो अगर हम A को इंक्रीज़ करते हैं SI इंक्रीज़ होगा, SV इंक्रीज़ होगा। अगर हम C को रिड्यूस करते हैं तो SI इंक्रीज़ होगा और SV इंक्रीज़ होगा। अगर हम B को इंक्रीज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करते हैं, तो SI यानी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी और वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हम N को इंक्रीज़ करते हैं SI को बढ़ाने के लिए, तो उस केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी के केस में हम देखते हैं कि R भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो रेशियो है N/R, ये रेशियो फिक्स रहता है। तो N के बढ़ने का कोई इफेक्ट जो है वोल्टेज सेंसिटिविटी पर नहीं पड़ता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को ज़रूरी नहीं है कि वो बढ़ेगी, सर्टेनली नहीं बढ़ेगी। तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट जो है, जो हमारा स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी को हम बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। सी स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो डबल हो जाती है। तो ये एक जो है एक तरह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एन को अगर हम डबल करते हैं तो आर भी डबल हो जाएगा। फिर हमने बात करी कि शंट रेजिस्टेंस जो है उसमें उसके पैरेलल में लार्ज वैल्यू का एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर हम एमीटर बनाना चाहते हैं उसे, तो हमें एक लार्ज वैल्यू का शंट पैरेलल में लगाना होता है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट में है, क्योंकि हमें एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना होता है। इसी तरह से ई स्टेटमेंट जो है वो भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस तरह से a और b हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।